Hello, welcome back to my channel. I hope you are all doing well. अभी दिल्ली में ओमिक्रॉन cases मतलब इंडिया में ओमिक्रॉन cases बढ़ have announced the results of Aiims BSc Nursing Entrance Examination 2022. So most probably admissions will get started. I don't know the date when they will start. Don't ask me because I don't know. And so I thought of doing a video to tell you things which you need to pack for coming for your hostel. Pack for your hostel. So if you are new to my channel, I am Sanavita. I've been working as a nursing officer in Aiims, New Delhi. So let's get started. So Ayata, actually after 2 weeks of exam, they announced the result, and I got a verification letter, admission letter through Gmail or internet, and they said that counseling is within 2 or 3 days. एंड आई वॉज सो शॉक्ड इतना जल्दी काउंसलिंग होता है क्या एम्स में? यस 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 दिस बाकी मतलब काउंसलिंग एडमिशन सब बहुत जल्दी जल्दी होता है. तो इफ़ यू हैव गॉट सिलेक्टेड एंड इफ यू आर गोइंग टू if you are coming for Aims, if you are going to take admission in Aims, then please 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 do pack your bag. तो क्या क्या हॉस्टल में क्या क्या मिलता है और हॉस्टल में क्या क्या नहीं मिलता है और क्या क्या रखना है वो सब मैं बता दूँगी इस वीडियो में, ठीक है? तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि 2 दिन के बाद मुझे काउंसलिंग ऐसा कुछ था, तो मैंने जल्दी टिकट बुक किया, फिर दिल्ली आ गए. तो मैंने ज़्यादा थिंग्स पैक नहीं किया एंड टेक एनी थिंग्स लाइक 3 or 4 क्लोथ्स था मेरे पास, बस फिर डॉक्यूमेंट्स था, बस कुछ और नहीं लिया था. बट थैंकफुली मैंने इधर से मेरे फ्रेंड्स के थ्रू और मेरा नोटबुक के थ्रू बाकी सब ले लिया. तो आई डोंट वांट यू टू टेक मेक द सेम मिस्टेक विच आई डिड. ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड. इफ यू आर गोइंग टू इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू Delhi, Aims Delhi for your BSc nursing admission, please do pack your bag. Like काउंसलिंग की 2 or 3 weeks के अंदर दे विल टेक क्लासेस स्टार्ट होते हैं. जैसे कि फॉर मी जुलाई 15 जुलाई 20 तक मतलब काउंसलिंग हो चुका था. देन बाय August 1 दे स्टार्टेड द क्लास. सो प्रॉबली ऐसे 2 weeks कुछ गैप होगा, आई डोंट नो एक्जैक्टली, बट लिमिटेड पीरियड होगा. तो यू चाहिए फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डॉक्यूमेंट्स. यस, डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए आपकी बैग में. बाकी कुछ भी नहीं होगा ना इस लिस्ट में, जो लिस्ट मैंने बनाया उसमें कुछ भी नहीं है तो यू कैन एडजस्ट, बट डॉक्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट. टेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग टी सी फ्रॉम योर स्कूल, +2 का डॉक्यूमेंट्स, +2 का रिजल्ट, +2 का सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट. इफ यू आर इन कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेना है, and your verification letter, etc etc. So please do keep your documents, every documents, even Aadhaar card, passport, सब कुछ डाल दो, कभी ना कभी यूज़ होगा. तो keep your documents and do keep 2 or 3 or 5 or 6 photocopies of them also, because वेरिफिकेशन के टाइम में आपको चाहिए होगा. तो बेटर यू टेक फोटोकॉपीज एटलीस्ट 10, आई विल से. मनी, हाउ मच मनी वी शुड कैरी विथ आवरसेल्व्स, क्या क्या कैरी करना है. So if you're new to this new to this place, new to Delhi, so I need you to take your own debit card और किसी का डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि देन फॉर एडमिशन पर्पस फ्रेंडली मैंने 2014 में एडमिशन लिया था. तो माई फीस वाज 700 समथिंग इंक्लूडिंग हॉस्टल फी. सो 700 रुपीज़. ओके, 700 रुपीज़ ओनली. मतलब मैक्सिमम कितना होगा आपका 10,000 रुपीज़ ले लिया, 2,000 रुपीज़ ले लिया फॉर एडमिशन पर्पस. बाकी जो आपका खर्चा है ना वो तो अलग है, बट फॉर एम्स का जो एडमिशन फीस 700 समथिंग है फॉर 4 years. ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट you don't want to keep many, you don't want to keep a big amount of money in your hand. हॉस्टल फीस में कुछ है नहीं, वो हॉस्टल फी कुछ है नहीं, बट या मेस बिल इज 2,000 रुपीज़. बिकॉज 2,000 रुपीज़ in my time this around 3,000 rupees now, 3,500 something. So better you keep 5,000 around with your hand, at least in your bank account.
ओके दैट्स अबाउट माई बुक्स। क्या क्या बुक्स आपको लेना है, मतलब घर से जब आओगे तब क्या क्या बुक्स लेना है? सच बताओ तो डोंट कीप एनी बुक्स, don't bring that huge books to here, okay? Because if you are going to prepare for NEET, then it's okay, then you can keep whatever you need. But for nursing purpose, nursing डिग्री BSc नर्सिंग के लिए आप कोई भी बुक्स बाहर से मतलब खरीदने के लिए, अलग से खरीदने के लिए कोई ये नहीं है. सो एवरी बुक्स विल बी रिकमेंडेड बाय योर टीचर्स. वो कॉलेज से प्रोवाइड करते हैं, बट यू हैव टू पे फॉर देम सेपरेटली. वो तो बाद में कैश इन योर बैंक अकाउंट, ATM है पास में हॉस्टल की, तो यू कैन ऑलवेज टेक फ्रॉम देयर एंड यू कैन पे फॉर योर बुक्स. सो जो भी बुक्स आपको यू नो नीड टू बाई द बुक्स फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम योर प्लेस to carry it to Delhi. So no need of buying any other books. Clothes. I think now it's raining in Delhi, so probably winter hai, so I suggest you to keep a sweater, a good jacket for yourself, because it's going to be cold outside. It is going to be very cold, so it's better you take a cloth. And अभी बारिश भी हो रहा है तो umbrella भी रख लेना if you want. And clothes तो मैंने I think I bought 4 clothes only. 1 is my lounge wear and 3 is normal wears. But I think we have counseling on first day. If you are in category, you will have counseling on the next day. So like for that purpose you can have 1 or 2 dresses. But baki jab bhi, if you are going to take admission or if you are going to stay in hostel, you have to keep 2 lounge wears with you now for now, and 2 normal casual wears. Okay, there is no restriction in nursing college that you should wear this. There's no dress code, but try to wear whatever casual wears you do for college. Okay, there is market, Delhi is famous for markets, so always you can buy things from outside in Delhi. So if you're new to Delhi, then I think you should keep 2 clothes, like 2 or 3 casual wears and 2 lounge wears. Okay, next thing is that you should always keep your essential items like your medicine, your mobile phone, charger, earphone, बाकी सब कुछ. तो in Aiims hostel will provide you with a cot, mattress and an almirah. बाकी जो भी चाहिए वो आपको लेना पड़ेगा. Okay, listen to this point once more. Aiims will provide you, Aiims hostel में you will be provided with cot, mattress and almirah for yourselves. Okay, single person को single coat and mattress मिल जाता है. You should carry your bed sheets and blanket because it is winter. If you cannot carry blanket, you can always buy from here, आसपास locally you can buy. Otherwise if you are from Delhi, then you just take your blanket. So talking about plates and cups, actually in mess they have they provide us with plate and cup. But if you think you need something separately, you want to use their things, then you can always carry a plate and cup, or you can buy it from local. You need to buy a bucket and cup. Yes, they won't provide you from first and second year. You will be having your own common bathroom. You will be admitted to 3-seater or 3-seater or 4-seater room, because that is a policy here. So you will not get single room. Yes, no, 3-seater or 4-seater room. So you will have a common bathroom. So it's better to buy your own bucket and cup. As I told you, general store है नीचे, hostel के नीचे, first floor, ground floor में. You can obviously get these things from. Some mothers will be so concerned about this, but actually I think I was also so concerned about this, because it was my first time coming to away from home. First time coming away from home, so I was so tensed about everything. But trust me, ऐसा कुछ नहीं है. You will be relaxed after this admission process. You will be okay. Then about food, actually hostel में mess है, 24/7 खोलते हैं, but there are timings for this. They will provide you breakfast, lunch, dinner and a snack, tea time. So if you pay money, I think 2,000 or 2,000 rupees में
आपको मिल जाता है. Even if you are first year, you can go and say there, you will get food. So there is no issue of food and something. If you don't want to keep induction cooker सब कुछ, वो तो बाद में आप ले लो, बाद में जब हॉस्टल फूड अच्छा नहीं लगेगा तब ले लो. बट फॉर emergency purpose you don't need to keep things like. Talking about uniform, no need of buying uniform from outside. क्लोथ लेना है ऐसा कुछ नहीं करना. Actually there is a tailor in hostel. She's having a stall there, she's having a shop there, so she will be there. And your class teacher will provide you a day where every student's measurement is taken by the tailor, and they will stitch your uniform. So it's better for first 2 years, I think. First years, I think it's better to get the uniform from the college. You have to pay the fees, but yeah, when you pay the money, they will give you uniform. Okay. Next and the foremost thing is, for uniform you need black shoes. एक्चुअली मेरे टाइम में वाइट शूज़ था, क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म कुछ और था, सलवार कमीज़ था. अभी इट इज़ लाइक अ कोट और शर्ट एंड पैंट, फॉर्मल पैंट्स. सो यू नीड अ ब्लैक शू, प्योर ब्लैक कैनवास शू, वॉट एवर यू नीड. सो अगर आपके पास घर पे है तो यू प्लीज़ कीप इट विथ यू, अदरवाइज यू कैन एक्चुअली बाई फ्रॉम. I think I have covered everything in this video. If you have any doubt, please do comment. If I will try to reply. Okay, that's it. That's the end of the video. I hope this video is useful for those who are going to come to Aiims. And I think this is same for all Aiims, I guess. मतलब अगर आप MBBS ले रहे हो या फिर कुछ और कोर्सेस के लिए भी आ रहे हो तो ये सब सेम है, they will same है. तो अगर you can always see this video. So if you like my video, please do like, share and subscribe. Subscription is for free. Please do subscribe, and thank you for watching this video. Bye bye.